Hello, everybody. If you are a director, principal, or faculty member, or a IQC coordinator, or professor, or assistant professor of any higher education institute, and your institute is undergoing the NAAC accreditation process or planning to go for the NAAC accreditation process, then I would request you to see this video till end, because a very useful information is there which will help you out to take the first step towards the NAAC accreditation and fulfilling your dream of getting good grade. तो दोस्तों, इस NAAC accreditation की जो वर्कशॉप मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस वर्कशॉप के अंदर 5 दिन के अंदर आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द registration process of the NAAC registration process of the higher education institute on the portal of NAAC accreditation. Then I will discuss how to file the IQAC, because it is one of the very important document which is prerequisite for moving further in the NAAC accreditation steps. Then I will discuss with you about that what is the pre-qualifier, how to assess that pre-qualifier. I will share with you an Excel sheet by which you can calculate how to calculate the pre-qualifier. Then I will discuss with you what is the DVV process and how this DVV process will look into the documents. I will discuss with you the documentation part of all the 7 criteria. And in these 7 criteria, the different documentation requirements are there. I will also discuss with you how to conduct the academic and administrative audits. Along with that, I will also discuss with you how to design the feedback forms, how to analyze them, and how this action taken report should be presented. So, दोस्तों, ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये बड़ा ओवरवेलमिंग होता है कई इंस्टीट्यूट्स के लिए जो जिनके पास में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है. अगर तो आपके पास में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है NAAC accreditation का, अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड करते हैं और 5 दिन के अंदर यू विल बी कमिंग टू नो कि बिगिनिंग से लगा करके एंड तक, पीयर टीम विजिट तक, NAAC accreditation प्रोसेस क्या है, इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है, और एक अच्छी ग्रेड हासिल करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करें. दोस्तों, इस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एस्टैब्लिश करके हाउ यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. सो अगर तो आप चाहते हैं NAAC accreditation प्रोसेस पे मास्टरी करना, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी 5 डेज वर्कशॉप के लिए, जो कि ARCNET इंडिया के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज की जा रही है. ARCNET इंडिया के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको. दिस इज द एक्रेडिटेशन रैंकिंग एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड इन दैट नेटवर्क है ये पूरा एक, जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, एचओडीज, डीन्स, प्रोफेसर्स एंड सीनियर प्रोफेशनल्स आर देयर. तो दोस्तों, अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल होने के लिए इस वर्कशॉप के लिए, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं. नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आज ही इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन फीस इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस वुड बी काउंटेड एज अ स्पॉट रजिस्ट्रेशन. सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन राइट नाउ एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो. दोस्तों, इफ यू आर वंडरिंग हु आई एम, then let me tell you about myself. I am Professor Mahendra Singh Rathore, and I am a professor and principal at one university in the pharmaceutical sector at Udaipur, Rajasthan. And I am on the mission to help 10,000 faculty members across the higher education institutes of India. Because in my career and during these reports going through of the NAAC, I was finding the fact that there is one thing that is lacking, that is a lacking of the training to the faculty members. And because the faculty members are the key stakeholders in the whole NAAC accreditation process, and if they are properly trained, then getting the NAAC accreditation good grades is very easy. Because ये देखा गया है कई बार कि इंस्टीट्यूट्स के पास में काफी सारी चीजें होती हैं, वो काफी सारे इवेंट्स करते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन की एब्सेंस में, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं हो पाते और उनका प्रॉपर वेटेज इंस्टीट्यूट को नहीं मिल पाता. तो अगर तो आप इंटरेस्टेड है इस वर्कशॉप में एनरोल होने के लिए, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें एंड एनरोल करें इस वर्कशॉप के लिए. मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर. बाय द टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.